कल की क्लास 99.99%। कल की क्लास 99.99%। क्या लगता है मैं क्या बोलने वाला हूं? नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है, कल मुझे एक पार्टी में जाना है, जाना आवश्यक है। ठीक है, एग्जाम चल रहे हैं सर, कोई क्लास छोड़िए नहीं। एग्जाम कब है? अरे अगले हफ्ते ही तो है, शुरू हो गया हफ्ते तक टाइम देखा मैं। क्या पता एक आध दिन जिस दिन कठिन हो उसे मैं खुद ना पढ़ूं। वैसे तो अब बीच में नहीं, इनका छुट्टी, कल छुट्टी आप चाहे तो सुबह पढ़ा दीजिए, कल मैं पढ़ लूंगी सुबह। कल छुट्टी किस बात की है? मेरा प्रिपरेशन नहीं और क्या। तो मेरा थोड़ी है। आप भूल भूल रहे जाते हैं सर। आप भूल रही हैं कि मैं कॉलेज में पढ़ाने लगा हूँ। ठीक है, मैं आता तो आप सर कितने बजे आते हैं? मैं आ तो 4 बजे तक जाता हूँ, मतलब मेरी कॉलेज की छुट्टी 3:30 पे हो जाती है, परंतु उसके बाद मैं 4:30 बजे से होम ट्यूशन पढ़ाने लगता हूँ। ठीक है सर, आप कितना पढ़ाते हैं? आप पढ़ाते पढ़ाते थकते नहीं हो? ये बात कई लोग मुझसे कहते हैं, पर मैं क्या करूं? अकाउंट्स चीज ही ऐसी है, आप इसको पढ़ाते पढ़ाते थक नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे, ठीक है, ये वाला। आपके पेपर कब से हैं? सर आप कल नहीं ले पाएंगे क्लास? आपके पेपर कब से हैं? आज से। अच्छा, इकोनॉमिक्स का कब है? आज आज हो गया? हो गया। अच्छा, हो क्या गया। बोला था सर मैंने कल आपको, तभी तो मैसेज करके बोला कि क्लास ले लीजिए सर, आपने बोला नहीं ले पाएंगे। अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा, आज इकोनॉमिक्स का एग्जाम था तभी। अकाउंट्स का कब है? अकाउंट्स का कब है? कल 46। के दिन, अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? कौन सी तारीख को? ट्यूसडे को नेक्स्ट वीक, 28 तारीख। ठीक है, तो इट वोंट मेक अ डिफरेंस। कल अगर हमारी क्लास नहीं भी हो रही है तो सैटरडे को तो हो ही जाएगी, सो वी आर नॉट एट एनी लॉस। ठीक है, वैसे मैं प्रयास करता हूँ, अगर हो पाया तो, मतलब प्रयास इसी तरीके से हो सकता है कि अगर मैं ना जाऊं, लेकिन मुझे जहां तक जाना पड़ेगा, आवश्यक है नहीं थोड़ा। सर आप जाइए, लेकिन सर मैं बोलती हूँ अगर आपको बीच में कोई टाइम मिले 4 से 5, 5 से 6 या 6 से 7, आप जिस दिन भी हाँ, अगर कोई होम जाएंगे तो ट्यूशन 8 बजे से पहले कोई ना जाएंगे। अगर होम ट्यूशन कोई कैंसिल हो गया तो मैं कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी होम ट्यूशन वाले ने कहा कि आज मत आइए पढ़ाने, तो ऐसा कर देंगे। 2 होम ट्यूशंस बीच में होते हैं, 4:30 से 5:30, फिर 6 से 7। उसके बाद मुझे घर आते आते 8 हो जाता है। तो इन दोनों में से किसी ने भी ना कह दिया तो फिर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कल ये 3-4 बजे तक क्लियर कर दूंगा कि हो पाएगी कि नहीं। क्लियर है? वैसे तो मैं आपका एग्जाम तक सिर्फ 2 चैप्टर करा पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 भी बहुत मुश्किल है, हो सकता है एक ही हो पाए अकाउंट्स में। अगर हम लोग ये पूरा वीक अकाउंट्स पढ़े मैम, तो मैं आपके 2 चैप्टर करवा दूंगा, और अगर अकाउंट्स प्लस इको मिक्स करके पढ़ेंगे तो फिर दूसरा आपकी चैप्टर तो सिर्फ 5 ही क्लास ही हुई ना? हो जाएगा। आपकी तो सिर्फ 5 क्लास हुई ना? इस चैप्टर के इस चैप्टर को 2-3 क्लास और लगेंगी बस। ठीक है, तो ये तो मुझे पता है, ये चैप्टर तो हो जाएगा, लेकिन अगले वाले का मैं बोल रही हूँ। अगला वाला चैप्टर 2 क्लास का चैप्टर है, वो छोटा चैप्टर है, 2 क्लास लगती है उस पे। उसका अगला जो चैप्टर है वो महामानव चैप्टर है, उसमें फिर से 10-12 क्लास लगेंगी। ठीक है, और उसमें 1-2 क्लास हो सकता है ज्यादा ही लग जाए। ठीक है,
चलो, अनिल, सुनील एंड संजय हैव omitted interest on capital for 2 years ended on 31 March 2016. Their fixed capitals in 2 years were अनिल 8 लाख रुपए, सुनील 7 लाख रुपए एंड संजय 3 लाख रुपए. सर तो ये दो चैप्टर जो हो जाएंगे उनकी वेटेज लगभग एग्जाम में कितनी है? फंडामेंटल चैप्टर की है अराउंड 11 से 12 नंबर, और जो सेकंड चैप्टर है यानी गुडविल कैलकुलेशन उसकी है 4 नंबर. तो बस जोड़ लो. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 और सेकेंड ईयर में है 3:2:1. ठीक है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करना भूल गए तो रिकॉर्ड कर लेंगे. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करना भूल गए, 2 साल का है तो रिकॉर्ड कर लेंगे. चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं. पर यहां पे एक चीज में अंतर है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना दोनों साल का अलग अलग है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है दोनों साल का अलग अलग है. ठीक है, तो उसमें क्या होगा फिर? तो दोनों साल का जो मेरा नेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ अच्छा इंग्लिश. सो देर आर 3 पार्टनर्स, अनिल, सुनील एंड संजय. Sir, in class 12 you were in St. Mary's Inter College only? Sir, in class 12 you were in St. Mary's Inter College only? Yes, from class 1st to class 12. So the interest on capital on Anil's capital will be 80,000. On Sunil's capital will be 70,000 for both the years. Since it's fixed capital, it will not change. And for the third one, Sanjay, it will be 30,000. Okay. The first year has ended on 2016. No, yeah, it has ended on 2016, so it must have started on 2015. So the first year is 2015, 2016, and the second year is 2016 and 2017. 2017. Yes. No. The 2 years have ended on 31st March 2016. It is saying that the 2 years have ended on 31st March 2016. So the first year will be 2015, 2016 and the second year will be before this. That will be 2014 and 2015. Okay. So first of all we will write interest on capital for 2014, 2015. Okay. This will be credited. 80,000 for Anil. So the capital will be different too? This will be 70,000. This will be 30,000. Total is 1,80,000. Sir? Yes. Sir? Yes. Speak. The capital will be different too for both the years. Why will it be different? It is fixed capital. Calculating interest on capital for 2 years. It is fixed capital. So the interest on capital will be same for both the years. For 2015, 2016 also it will be 80,000. It will be 70,000 and 30,000. Okay. Okay. Now, the previous day when we studied this concept, we studied this that if we have omitted interest on capital, salary, commission, these are expenses, and these expenses have not been shown in our books of accounts, and these expenses have not been shown in our books of accounts.
So our profit in profit and loss account is understated. Okay, net profit is, sorry, not understated, it's overstated. Okay, net profit is overstated, and so we need to reduce that amount of profit. The amount of profit we need to charge this interest on capital over there in, and we need to reduce the amount of profit, the amount of excess profit due to this interest on capital, salary or commission. Is it clear? Yes, sir. Okay, I hope it is clear to you. If not, we can discuss this in Hindi too. No, you have told the same thing in previous class also. Yeah, but you have an habit of forgetting things. No, sir, I don't have this type of habit. You have it. I'll take a test after this chapter of this chapter, and on the date of test, you will start forgetting things. Okay, so first of all, we will divide division of 1,80,000 rupees profit for 2014-15 year in the ratio of 4 is to 3 is to 2, because this is the first year's ratio. So we'll distribute it in 4 is to 3 is to 2 ratio. Okay. So Anil will get how much? 4 by 9 of 1,80,000. That will be 80,000 rupees. Okay. This is debited. Okay. How much will Sunil get? 60,000. And how much will he get? 40,000. 1,80,000. Sir, you are calculating this profit from 3,60,000. No, 1,80,000 the first year, because the profit sharing ratio of both the years is different. No, so that is why we'll distribute 1,80,000 in a different ratio and 1,80,000 in a different ratio. Okay, first 1,80,000 will be distributed Okay, in so 4 is we'll to 3 is not to 2 ratio, calculate on and the second total 3,60,000. 1,80,000 rupees will be distributed in 3 is to 2 is to 1 ratio. Okay, now speak. Now speak. Sir, Now. we will not distribute the profit in 3,60,000. No, we would have distributed the whole 3,60,000 if the profit sharing ratio of both the years would have been same. But since it is different, so we will have to distribute them differently in different ratios. So that is why we are picking both the amounts differently. Okay. 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 Anil's share of profit here will Yes, be then we will divide in the 90,000 total. rupees. The second is Sir, 60,000 rupees. And the third one is 30,000 rupees. What sir, happened? What happened? sir, if there is given in question that you have to calculate total profit or you have to distribute it in for 3 years, so we will divide it by 3 total profit, right? Yeah, we will multiply it initially the interest on capital by 3 if the profit sharing ratio of all the 3 years is same. But if it is different, then we'll show it differently, and then we'll distribute the profit also differently in those different ratios. Okay. Okay, I hope you would have got it. I hope you don't have a problem with this English. It No, was sir. your choice. Yes. Yes, your choices are quite different. So Anil will get an excess of 10,000 rupees on debit. Sunil will get
a 20,000 rupees excess on his credit, and Sanjay will get a 10,000 rupees excess on his debit. So the adjustment entry will be Anil's capital account debit with 10,000 rupees, Sanjay's capital account debit again with 10,000, and Sunil's capital account credit with 20,000. Is it clear? Yes, sir. Okay, moving on to the next one. So table showing adjustment is prepared after making all the counts. Yes, it is something new that we have got after preparing books of accounts. So is there anything which is shown in balance sheet in from table showing adjustment? What are you speaking? Nothing is shown Sir, is there from. anything? No, if there is a retrospective effect that causes an increase or decrease in assets or liabilities, then it is shown, but rarely it happens. Solve this question number 49. I hope you don't have a problem with There is English. manager's commission. Okay, so what is that problem? Try to solve the other things. Okay. Do you have any problem? I am Yes, just sir. solving till interest on capital. Salary also, commission also. Yeah, yeah, included. It is included in my. Commission is also very easy. Manager commission point is very easy. The manager commission will lead to an decrease in the profit. Manager commission will lead to decrease in profit, and it will be a debit balance. Okay, I hope it helps you to solve it. Mother, what are you speaking? No, please don't stop. No, 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 no. Please stop speaking. Why No. are you talking to your mother in English? No. No, I'll talk with everybody in English. St. Mary's effect is back. In my school, if we used to speak even a word in Hindi, we used to get a fine of 20 rupees. So we are So quite. guys, I was in a convent school too. Okay, that's great. But I was uh, I was in Stella Bay Dental College. That's great. Convent schools are good. But I was there till only till fourth class. Okay. Until I was there, my English was so good speaking. But after leaving that school, other schools which are not convents, they don't focus on English speaking so much. They explain in Hindi, talk in Hindi, and in this Saint Teresa College I am currently studying.
Here is totally English too. Except the English teacher, anyone don't speak English. That's why my English got so bad. Only convent schools focus on English properly. Rest, But not on Hindi. yeah, they don't focus so much on Hindi. And the other schools focus quite a lot on Hindi, not on English. That is the thing. Have you solved this? No. I am doing. No, you'll take an year to do this. A, B, C are the three partners. Sir, please open the question. No, you are taking an year to do it. I'll solve it now. No, sir, I will. I'm just calculating the totals, please. Okay, just a second. Mother! Mother! I want to eat turmeric rice. Turmeric rice. Okay. Turmeric means haldi. Hmm. 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 Mhm. Hmm. Ganj. Till Telibag I took. Hmm.
Sir, manager's commission will be shown in this only. Yes, obviously. It will be debited. Yes. Okay. In total, Hmm? sir, manager's commission will be shown in total or in profit sharing ratio of the partners. Mm. The total manager commission will be calculated and then it will be distributed between the three partners in their profit sharing ratio. Okay. Okay. Did you get it? Yes, sir. Okay. A, B, C. Salary is to be paid to B 5,000 rupees per month and to C 10,000 rupees per quarter. So this means 5,000 per month means on an annual it will be 60,000 rupees. Okay. And for C 10,000 per quarter means 10,000 into 4 which is 40,000 rupees. Okay. Any doubts? Salary being an expense written on the credit side of interest on partner's capital account, credit balance 60,000 and C will be 40,000 rupees. What happened? England, interest on capital is 6% per annum. So for A it will be 4 lakh into 6% which will be 24,000 rupees. For B it will be 2 lakh 50,000 into 6% it will be 15,000 rupees. Mother! Cooker is calling you. And for C it will be 1 lakh into 6%. 1 lakh into 6%. 1 lakh into 6% which will be 6,000 rupees. So interest on capital will be 24,000 rupees, 15,000 rupees and 6,000 rupees. अच्छा 1 lakh, this will be 45,000 and this will come down to 24,000, 75,000, 46,000, 1 lakh 45,000. Now we will distribute this 1 lakh 45,000 of profit in profit sharing ratio of 2 is to 2 is to 1. Sir, 5272.7, 5272.7, It is 266.2. absolutely wrong. 58,000, How? 58,000 and 29,000. Calculate No, 1 no, lakh. no. I am telling manager commission. I am telling manager commission. No, manager commission is wrong yours.
It is absolutely wrong. You have done an absurd calculation which has no moral values and no ethical values and no financial values, no economic values. Absolutely absurd. So it will come down to this will be debit and the other is and these are all So why credit are you balance distributing profit first? because manager commission will be So dealt that's on why I it. was saying that I will not do this question. I don't know how to do why I calculated manager's commission first. Manager commission will be done dealt with later. First, profit distribution will be done. So this is not right. You must have told me this. No, I will not tell you this. This is a pretty easy thing to guess for a 12 class student. So, debit balance is in This is excess totally for wrong. A You have not done good things. 34,000, B will be 17,000 and that too of credit. It is debit, this is credit, and for C it will be 17,000 of credit. Okay, now we will do manager commission. No, I didn't get it. Why you have divided the profit in partners first? It is done like this only. This is the treatment to be done. Okay, Okay, sir. manager Please commission. explain this part of this question in Hindi, please. हो If you गया. would continue teaching me in English, I will not get anything. हो गया मतलब आपका इंग्लिश का भूत उतर No, गया. sir. I have I have not told you to stop teaching me in English. Just this part of this question in Hindi. देखो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मैनेजर कमीशन क्यों बाद में किया जा रहा है. आपकी बुक्स में डीके गोयल में और ज्यादातर बुक्स में ये बाद में किया जाता है तो इसीलिए बाद में कर रहे हैं. ठीक है, इसका और कोई सिद्धांत नहीं है. सर क्लियर. लेकिन मैनेजर कमीशन तो पहले हाँ वो उसको तो पीएल पीएल में. में पर ये अकाउंट में पीएल थोड़ी दिखाते हैं, बन रहा इधर है. इसमें कैसे पर ये दिखा रहे पीएल हैं? थोड़ी बन रहा है तो एक कैलकुलेशन की जा रही है. तो कैलकुलेशन का अपना ही कोई सिस्टम होगा. ठीक है, इसी सिस्टम के हिसाब से करो. और प्लस अगर आप मैनेजर कमीशन को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले करना चाहते हो कर लो. लेकिन फिर जो मैनेजर कमीशन का टोटल जो आएगा ना एबीसी का मिला के उसका कोई इफेक्ट मत डालना. उसको मत डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट्स में. ठीक है, प्रॉफिट 1,45,000 ही बटेगा तीनों पार्टनर्स के बीच 2:1 के रेशियो में. मैनेजर सर कमीशन तो को मैंने क्या किया कि 1,45,000 से ही मैंने मैनेजर कमीशन निकाल दिया, आपने पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया नहीं है। उस पे थोड़ी कैलकुलेट होगी. मैनेजर कमीशन प्रॉफिट पे कैलकुलेट होती है. 145 पे क्यों होगी? 145 तो आपका ओवर स्टेटेड प्रॉफिट है. 1,45,000 तो आपका ओवर स्टेटेड प्रॉफिट है ना. उसके ऊपर थोड़ी ना, वो तो आपके नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होती है मैनेजर कमीशन. नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में दे रखा है, देखो कितना है. 2,20,000 तो 2,20,000 का करेंगे और ये आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110 कर दो. कितना आ जाएगा ये? 10/110 ये कितना आ जाएगा? 20,000. मैनेजर कमीशन होगी 20,000. अब ये 20,000 की जो मैनेजर कमीशन है ना, ये तीनों पार्टनर्स के बीच बांट दो 2:1 के रेशियो में. किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में. तो 8 को मिलेगा 8,000, इसको मिलेगा कितना? 8,000 और सी को मिलेगा 4,000. अब मैनेजर कमीशन डेबिट बैलेंस है. ठीक है, तो ये जोड़ जाड़ के आ जाएगा 42,000 ए का डेबिट बैलेंस. बी का आ जाएगा 9,000 क्रेडिट बैलेंस और इसका आ जाएगा 13,000 क्रेडिट बैलेंस. सर ये बराबर नहीं आ रहा. 9 13 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा और डेबिट वाला 42 है. हाँ तो ठीक है करिए. तो यहाँ फिक्स कैपिटल्स थी. क्वेश्चन में क्या लिखा था? फिक्स कैपिटल है तो ए का करंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा. कितने से डेबिट करेंगे? 42,000 से. बी का करंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे कितने से? 9,000 से. और सी का करंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे कितने से? 13,000 से. सर ये बराबर नहीं आ रहा.
डेबिट पे अमाउंट कम पड़ रही है, कितनी अमाउंट कम पड़ रही है? 20,000। तो 20,000 क्या होगा? 20,000 का मैनेजर कमीशन है, तो कर दो टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग, टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, क्लियर है? ये जबरदस्त क्वेश्चन है, क्लियर है? सर हम्म। नो सर, आपने पहले ये मतलब सैलरी ये तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सर ये डिवीजन या प्रॉफिट का तो ये पहले ही हो जाएगा, ठीक है? अगर ये मैनेजर कमीशन करने से पहले का प्रॉफिट है तो मैनेजर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग एक और बार नहीं करेंगे? नहीं, क्यों? जब हम लोग पीएल अकाउंट में मैनेजर कमीशन दिखाते हैं तो उसको नया नेट प्रॉफिट भी तो निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस थोड़ी निकाल रही है, तो बस एक इफेक्ट है जो आप दिखाना भूल गई हो, बस उसको दिखा दो। ठीक है, और सर आपने 20,000 क्रेडिट में क्यों लिखा है? यहाँ मैनेजर कमीशन में थोड़ी ना कहीं बोला गया है कि क्रेडिट करो डेबिट करो इसमें। मैनेजर 20,000 वो क्रेडिट में अमाउंट कम पड़ रहा था ना, 20,000 रुपए, तो इसीलिए मैनेजर कमीशन ही सर तो डालेंगे। कम पड़ेगा तो हम लोग कहीं का उठा के भी थोड़ी ना डाल देंगे। कहीं का उठा के? अरे 20,000 कम पड़ रहा है और क्या है हमारे पास 20,000 रुपए का? और कोई चीज है 20,000 रुपए की सिवाय मैनेजर कमीशन के? तो यही तो डालना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज से तो बैलेंसिंग करोगी ना। कुछ तो चाहिए बैलेंसिंग के लिए, किससे बैलेंस करोगी और क्या करोगी? 20,000 का कैपिटल अकाउंट सर क्रेडिट लेकिन कर। ऐसा बैलेंस हो क्यों नहीं रहा था अपने आप में ही? हाँ, तो ऐसे जरूरी थोड़ी है हर बार हो, इस पे नहीं हो रहा है। क्लियर है? सर हमें 75,000 में से 17,000 और 9,000 माइनस किया ना हाँ। बी में। हम्म। उचित सर है। ये अकाउंट के रूल के खिलाफ नहीं है कि अगर ये बैलेंस होना तो चाहिए दोनों तरफ से, ऐसा अगर कोई नहीं हो रहा है जरूरी तब नहीं है। तो ये गलत है ना? अकाउंट्स में बहुत बार ऐसा हो चुका है कि कुछ ना कुछ बैलेंस कम पड़ रहा है, तब हमें बैलेंसिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो बैलेंस करिए, यहाँ पे भी मैनेजर कमीशन से बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न किया जाए। ओके सर, दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन। हम्म, अदर विल द नेक्स्ट वन विल बी मोर ट्रिकी। सर डू यू थिंक माय इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी वेरी बैड? यस, एक्सट्रीमली बैड। ओके सर, बाय द वे आई एम नॉट जोकिंग प्लीज। इट इज ओके, बट it needs improvement. बट इट इज, या it is clearly if you want visible to that if you I have want not to spoken English in years. if you want to give competitive exams paper in future, there is a very good standard level of English that is asked in exams, and for that your spoken English must Okay. be good. Question 50 is to be Hmm. solved. Try it out. I'm just coming in a second. लैपटॉप के बगल में आके कह रही है ऐसे को बोलता है कभी नहीं चला सकता, अकल नहीं है तेरा सर, ट्यूशन छोड़ दो भाई लो, सुनना पाए थे तो बोलो तुम्हारे से
आपके दिमाग खराब है हम क्या छोड़ी 3,000 रुपए फ्री के छोड़ दी तो भैया मेरा तो आपने पॉइंट देखना है हाँ ठीक करनी है लैपटॉप की बटन ना खींचना है छोड़ दिया दिमाग से जीरो से कौन कौन बता और भूल लगा बता मैं दे दूंगा लगाना लगवाना नहीं यार आपके पास लगाना आप ट्यूशन शुरू कर देंगे कभी भी कुछ भी बोल देते कभी ये भी घर के बगल में कर रहे थे उसको भी दे सकते हैं पागल पागल बगल में आके सुना दे कभी मुझे देख के बात करनी पंजाबी ये कहाँ है ये पाइप लिख कर मत दो बहुत सारे देंगे ना पीछे है ना हाँ वो तो पता चलता है पाइप करना है पता चलता हेलो 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 Yes, sir. हो गया I am doing. ओके यू आर डूइंग ओके Yes. keep doing keep doing keep doing keep doing I'm starting this question because this is another very tricky question No, sir. How? I am not seeing any tricks in this question. okay then just solve it a little bit more you'll start seeing a lot of tricks 52 53 the questions I gave you in the previous class in the question that I will be giving you in this class all have to be done until the next class okay and if you are not Okay. completing your homework then your complaint will go straight to your mother and then Okay, sir. she might give you punishment might throw you Hmm. out of the house anything can happen mothers can do anything okay Okay, sir. once I also did not do my homework my mother also threw me out of the house but I came back in the house it takes a lot of effort to speak English. Sorry, sir. I was unable to hear you. Can you please speak a bit louder? It takes a lot of effort to speak English. Yes, sir. Can you tell me about the tricks?
in this question, sir, please? Okay, since you have surrendered, now let's do it. No, Suresh no, and no, no. Ramesh. I was just asking. Suresh and Ramesh are two partners sharing profits in the ratio of 3 to 2. Their fixed capital is Suresh is 9 lakh rupees and Ramesh is 6 lakh rupees. So the interest on capital on Suresh will be 9 lakh into 5%. 9 lakh into 5% will give you 45,000. And for Ramesh, it will be 6 lakh into 5%. That will give you 30,000. So Suresh, Ramesh, and the total. Let's get rid of this. Do you know this whole partnership you will have to study in bcom first year, first semester? The whole partnership. So study it for once, study it for twice. I don't know what the hell I spoke. Interest on capital. Suresh is how much? 45,000 and Ramesh is 30,000. 75,000. 60,000 rupees per annum salary is for Suresh and 2,000 per month, that means 24,000 on an annual is for Ramesh. Okay, 60,000 and his is 24,000. That gives you 84,000. It will be salary credited. Now, now, listen to me very, very carefully. Listen to me very, very carefully. Okay, Okay. just a second. I have forgotten what I was going to speak. Hmm. Listen, the profit for the year ended 31st March 2018 is how much? 2,34,000. This profit is to be distributed between the two partners in 3 to 2 ratio. But the last line says that this profit has been distributed between the two partners in equal ratio, that is 1 is to 1 ratio. Okay, and that too it has been done without providing for the above two statements, that is interest on capital and salary adjustment. Is it clear? This 2,34,000 profit first needs to be deducted with the interest on capital and salary, and then the remaining profit needs to be distributed between the two partners in 3 to 2 ratio. But this 2,34,000 of profit without making any adjustments has been distributed between the two partners in equal ratio, isn't it? Is it clear to Okay, you? but sir, no. What is it not clear to you? What is the problem? Sir, as normal, the profits are distributed to the partners. So why we are deducting the profits of the partner in this question? Oh, horrible question. In the previous questions of table showing adjustment, there was nothing this type of line given. This type of line was not given in those questions.
Okay, this type of line was not Yes, sir. given. This is a new line over here. And what this line means is that what had to be done was the profit earned by the firm had to be deducted with the interest on capital and salary, and then the remaining profit has to be distributed between the two partners in 3:2 ratio. But what has happened is you haven't deducted any interest on capital and salary because you have omitted them. Okay? Since you have omitted them, you have not deducted Sir, them, and the whole profit has been distributed between the two partners in equal ratio, that is 1:1. This is the prime error that we have committed, isn't it? so the main point here is that we have distributed the profit in equal ratio. Yes, we have distributed in a wrong ratio. There are two errors. We have not deducted interest on capital and salary, and we know how to adjust that. We have done it previous questions. But the second error that we have done, that we have distributed the profit in wrong ratio, how do we need to correct that error? That we need to learn. How do we need to correct that Okay, error? That we need to learn. Okay. okay, okay. So how will we correct it? Now, since we are crediting interest on capital and salary over here, um let us the profit is how much? 2,34,000. Let us deduct interest Hmm. on capital from it, that is 75,000, and we shall also deduct salary from it, that is 84,000. What is the remaining profit after this? The remaining profit after this will be 75,000 rupees. It will be how much? 75,000. This 75,000 rupees profit will be distributed between the two partners in their profit sharing ratio. Remaining profit distributed. It will be distributed in which ratio? In 3:2, their profit sharing ratio. And again, it will be a credit balance. This profit is also written on the credit side of partners capital account. So 75,000 into 3 by 5, Suresh will get 45,000. And Sir, 75,000 into 2 by 5, Ramesh will get 30,000. So that comes out to be 75,000. Yes, you are trying to speak something, and I hope it is not irrelevant. Please speak. I'm not granting it. I'm not granting it. Yes, you can never guarantee. You and Shagun Mishra ask the most irrelevant questions in the entire solar system. Please ask now. Okay. Sir, Hmm. can I ask this question in Hindi? And I want you to answer this question in Hindi too, please. Yes. Because I think there are something missing in your explanation which you have given to me just now, just because you were explaining it in English. Sorry. Yes, yes, yes. I Okay. think Thank you. English is getting too much. So you can come back to Hindi. English is getting too much Actually, inside I your think head. no, it's not like that. But I think that English is when we talk. When you ask me a question, you can ask me in English, and I can give you answer in English. But when you can explain it in Hindi. ये बढ़िया है मतलब आपका आ, मतलब एक क्लास का ही भूत था ये केवल कि सर इंग्लिश में ही पढ़ाई है पूरा नो सर, नो सर। अब आप बोल रहे हैं तो मैं डेली बोलूंगी। बोलो क्या पूछना है हाँ, मैं पूछ रही थी कि सर आपने बोला कि इसमें जो प्रॉफिट था वो उस क्वेश्चन में लिखा है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, हम्म उसको हम लोग को डिडक्ट करना होगा, तो उसमें से हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी क्यों डिडक्ट की? क्योंकि वो करना था प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पहले डिडक्ट करना और उसके बाद फिर बचा कुचा प्रॉफिट क्या करना है पार्टनर्स को दे देना है हम्म, डिस्ट्रीब्यूट कर ठीक देना है। है उनके ओल्ड रेशियो लेकिन हाँ सर, लेकिन वो तो हम लोग इस वाले प्रॉफिट से करते हैं ना, जो इसका टोटल निकल के आता है उससे, उस प्रॉफिट से माइनस, इसमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको माइनस करते हैं। वो तो तब करते पिछली हैं बार कि का तो वो प्रॉफिट तो कोई तब आता ही नहीं है करते बीच हैं में।
जब आपने प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो। यहाँ पे प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो पहले तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो आपका बच रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सही रेशियो में, और उसके बाद जो गलत रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना उसको लास्ट में लेस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी जोड़ जाड़ के ये कितना आ जाएगा, ये जोड़ जाड़ के आ जाएगा देखो जैसे 1.5 लाख रुपए सुरेश का, और रमेश का कितना आ जाएगा 84,000 रुपए, बराबर हुआ कितने के 2,34,000 के। और ये तीनों क्या आए हैं, क्रेडिट बैलेंसेस आए हैं। तीनों ही चीजें पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे लिखी जाती हैं। अब इसमें से मैं लेस कर दूंगा जो प्रॉफिट आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया था, ताकि वो जो पुराना वाला इफेक्ट है ना, जो गलत इफेक्ट है उसको मैं हटा सकूं। जो पुराना गलत इफेक्ट है ना, जो प्रॉफिट आपने इक्वल रेशियो में बांट दिया था उसको मैं हटा सकूं, इसको मैं यहाँ से लेस करूंगा। तो आपने 2,34,000 के प्रॉफिट को इक्वल बांटा था, तो इसको दिया होगा 1,17,000, और इसको दिया होगा कितना 1,17,000। ठीक है, तो सर बताऊँ तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया। क्यों? अ, मतलब इतना तो समझ में आया कि हाँ इंटरेस्ट ऑन और कैपिटल ये दे दिया, डेबिट सैलरी बैलेंस दे है, दी, और ये ये भी समझ में आ गया कि ये आएगा 37,000 क्रेडिट का, और ये आएगा 37,000 डेबिट का। 37 नहीं 33, सॉरी। अब बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा? सर यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दिया, और ये भी समझ में आ गया जो क्वेश्चन में लिखा है कि उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत ले लिया था और गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जो वो लेकिन आप उसके बाद यहाँ पे जो उसकी जो आप एडमिशमेंट वो थी ना वो नहीं समझ में ओवरस्टेटेड आई। प्रॉफिट का या अंडरस्टेटेड प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांट के जो ट्रीटमेंट कर रही थी ना अभी तक, वो तब कर रही थी जब प्रॉफिट को आपने रॉन्ग रेशियो में ना डिस्ट्रीब्यूट किया हो। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। इसमें आपने प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो आपको पहले सही रेशियो में बांट के दिखाना होगा, और उसके बाद जो गलत रेशियो का इफेक्ट है वो भी हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वहां से लेस कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने का इसमें तरीका बदल जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये क्वेश्चन सर की आप ये वैरायटी, क्वेश्चन मुझे कल दोबारा कराएंगे? ये क्वेश्चन दोबारा से मैं आपको करूं? मैं तो 3-4 होमवर्क देने को सोच रहा था इस पे मैं। नहीं सर, रियली ये वाला नहीं समझ में आया मुझे। फिर से समझो, मैं होमवर्क जरूर दूंगा, चाहे मुझे 5 मिनट लेके फिर से समझाना पड़े ये। ठीक है, अम, मैं ये बस पूछ रही हूँ कि जब हम लोग ने जो प्रॉफिट था 2,34,000 का, उसको हम लोग इसमें से माइनस क्यों कर रहे हैं? मतलब उसमें से ये माइनस क्यों कर रहे हैं आईओसी और सैलरी? उसको डायरेक्ट हम लोग डेबिट करके दिखा देते कि हाँ भैया गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हो गया, बस खत्म। किसको डेबिट करके दिखा देते? कि 2,34,000 को क्या न्यू डिस्ट्रीब्यूट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। न्यू क्या मतलब? करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2,34,000 को कैसे हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर करेक्ट। देते हैं? देखो पहले आप ट्रीटमेंट ये कर रही थी, पहले ट्रीटमेंट ये कर रही थी कि 75,000 और 84,000 ये जो जोड़ के आ रहा था उसको आप 3:2 के रेशियो में बांट रही थी, है ना? 75,000 और 84,000 ये जो ओवर स्टेटेड अमाउंट था, ये जो ओवर स्टेटेड प्रॉफिट था, इसको आप क्या कर रही थी, ओल्ड मतलब 3:2 के रेशियो में बांट रही थी दोनों पार्टनर्स के बीच, है ना? लेकिन ये ट्रीटमेंट आप तब कर रही थी जब आपने एंटायरली कैपिटल और सैलरी को भूल गई हो रिकॉर्ड करने से, और केवल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, प्रॉफिट ओवर स्टेट हो रहा है या अंडर स्टेट हो रहा है, और रॉन्ग रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया पार्टनर्स को। लेकिन यहाँ पे रॉन्ग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो पार्टनर्स के बीच, तो रॉन्ग रेशियो की वजह से एक अलग इफेक्ट जा रहा है। रॉन्ग रेशियो की वजह से पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर एक अलग इफेक्ट जा रहा है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इंटरेस्ट और कैपिटल और सैलरी लिखने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट मेरा है यानी 75,000, उसको मैंने सबसे पहले सही रेशियो में बांटा यानी 3:2 के रेशियो में बांटा, और उसके बाद जो प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो मैंने लास्ट में यहाँ से घटा दिया, जो कि मैंने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 1:1 के रेशियो में। और उसके बाद नेट अमाउंट आई कि सुरेश का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 33,000 रुपए, और रमेश का डेबिट बैलेंस आ रहा है 33,000 रुपए। तो इसीलिए रमेश का करंट अकाउंट डेबिट होगा,
और सुरेश का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। अब मुझे सर रेशियो क्या था पार्टनर्स का? सही रेशियो था 3:2, लेकिन आपने बांट रखा था 1:1 के रेशियो में। 3:2। हम्म। जब रॉन्ग रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ये टेबल बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये लास्ट वैरायटी ऑफ सर ये क्वेश्चन 75। और ये लास्ट वैरायटी ऑफ ओके ओके। क्वेश्चन है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का। अब इसके बाद टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में और कोई भी वैरायटी नहीं है, ये लास्ट वैरायटी थी। हम लोगों ने 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन किए हैं इसके। बोलो। सर लेकिन 75,000 कैसा है? इसका टोटल 84,000 और 75,000 अरे का ये टोटल तो तो सबसे इजी है, 159,000 आया ना। ये तो सबसे इजी बात है। आपका प्रॉफिट था 2,34,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होगा, फिर सैलरी टोटल लेस होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करोगी दोनों पार्टनर्स के बीच। सर जी। यही तो मेरा मेन क्वेश्चन है कि सर हम लोग जब पिछले क्वेश्चंस में ये चीज देखे अरे ही है थे कि भैया, उस समय। यही तो मेरा मेन सोल्यूशन है कि पहले के क्वेश्चन की बात अलग थी, वहां पे हम ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड प्रॉफिट को निकाल के डिस्ट्रीब्यूट किए दे रहे थे, पर यहाँ पे माजरा ही अलग है, यहाँ पे समस्या ही अलग है यार। रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो रॉन्ग रेशियो के इफेक्ट को भी सॉल्व करना पड़ेगा, और रॉन्ग रेशियो के इफेक्ट को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, समझे भाई? अरे मतलब बहन, कुछ समस्या है अभी भी आपके मस्तिष्क में। आप कुछ खतरनाक सा डाउट मेरे सामने लाने वाली हो, और मुझे बहुत भय लग रहा है इस बात से कि पता नहीं अब क्या बोल दोगी आप। मेरे हाथ कांप रहे हैं कि कौन सा खतरनाक डाउट आने वाला है। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, कोई डाउट है कि नहीं? है तो। क्या डाउट है? यही कि पहले जैसे करते थे वैसे क्यों नहीं कर रहे? अरे हाँ मैम, यही तो समस्या है। मेरी तो समस्या पता है क्या है, कि जैसे हम लोग जर्नल के चैप्टर में क्लास 11th में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी तरह क्यों नहीं कर रहे? जिंदगी भर क्वेश्चन उसी तरह करने चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वही करते। चीजें बदल क्यों रही हैं? क्यों ये क्वेश्चंस की वैरायटी क्यों बदल रही है? हर बार वही होना चाहिए। क्वेश्चन की वैरायटी बदलेगी तो सॉल्यूशन की वैरायटी भी तो नो बदलेगी। सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है इस बार। हाँ। सर बस मेरा मेन क्वेश्चन यही है ना कि हम लोग 2,34,000 को क्यों पहले डिस्ट्रीब्यूट करें, उससे पहले हम लोग 1,59,000 को करना चाहिए। नहीं, वो नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे केवल और केवल बात ओवर स्टेटेड प्रॉफिट या अंडर स्टेटेड प्रॉफिट की नहीं है, उससे बड़ा समस्या ये है कि प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट दिया है। उसका भी इफेक्ट हमें सर लगे हाथ तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको 2,34,000 से करेंगे तो उसका इफेक्ट सही हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग 2,34,000 को अ, इधर मतलब उसमें से देखो, आईओसी और सैलरी माइनस कर देंगे। हो ये रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्रेडिट नहीं किया था आपने, कर दिया, जॉब डन। सैलरी को नहीं दिखाया था, उसको दिखा दिया, जॉब डन। रिमेनिंग प्रॉफिट को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जॉब डन। अब ये जोड़ जाड़ के जो अमाउंट आई उसमें से जो प्रॉफिट आपने गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उसको आपने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी जो एडजस्टमेंट एंट्री आ रही है वो आप पास कर रही हो। क्लियर है? Okay, sir, I will ask this question again tomorrow वाई? after thinking about it. ओके, कीप थिंकिंग। देखो, सोचना मनुष्य का धर्म है। सोचने से ही आप अपने टीचर्स का दिमाग खराब कर सकते हो, और स्वयं का भी। टीचर्स का दिमाग खराब करने से क्या प्राप्त होता है? मानसिक संतुष्टि। वो स्टूडेंट ही क्या जो टीचर का दिमाग ना खराब करे। मैंने भी अपने टीचर्स का दिमाग खूब खराब किया, ऐसी बात नहीं है। क्लियर है? तो आप परंपरा को आगे बढ़ाओ। मैंने अपने टीचर्स का किया, आप मेरा करो। फिर कल को अगर आप पढ़ाओगी तो लोग आपका करेंगे।
वो अलग बात है कि आप जब टीचर बन जाओगी तो थोड़ा इरिटेट भी हो सकती हो इस चीज़ से, जैसे कि मैं अब होता हूँ, लेकिन उस समय मुझे भी इस काम में मजा आता था। ठीक है, टीचर्स को इरिटेट करने में। क्लियर है? लेकिन टीचरों के पास सबसे बड़ा अस्त्र क्या होता है स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए? होमवर्क। क्या होता है? होमवर्क। तो लो 51, लो नो सर, इस 52। क्वेश्चन का ना दीजिए प्लीज। और चाहिए? क्या कह रही हो? और चाहिए? लो 53। क्या कह रही हो? अभी मन नहीं भरा? और लो फिर 54। क्या कह रही हो? और इच्छा है अभी? ले लो और 55। क्या कह रही हो? एक और ले लो फिर 56। ठीक है? और चाहिए क्या? नहीं, अब मत करो, बस 6 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है? प्लस और उस दिन के भी तो हैं, वो भी तो करोगी। वो और कौन करेगा? अगर आप नहीं करोगी तो कौन करेगा? ठीक है?